Chartered accountants are no longer just custodians of finance. They are architects of strategy, growth, and leadership at the highest level of industry. Namaskar and warm greetings to everyone. It gives me immense pleasure to connect with you today on this special occasion. Through the Committee for Members in Industry and Business, ICAI is proud to create platforms where such excellence is recognized, celebrated and shared so that we all can learn and be inspired. These journeys reflect the core values of our profession: integrity, knowledge and leadership. To our young and aspiring members watching, let these stories fuel your ambitions. Remember, with the right mindset and unwavering commitment, the sky is truly the limit. You make us proud. Let us continue to strive for excellence together. Thank you. In this present global panorama, marked by rapid regulatory and technological disruptions, the demand of chartered accountants have grown manifold not only in India but across the world. CAs are playing a pivotal role in protecting the public interest by being a custodian of the financial landscape. Chartered accountants are also playing an important role in promoting the adoption of innovative technologies such as artificial intelligence and machine learning. The increased adoption of these new-gen technologies is contributing to the ease of doing business and are paving the way for a brighter future. The Institute of Chartered Accountants of India is deeply committed to creating a comprehensive professional ecosystem that meets the changing needs of society. A multitude of progressive initiatives have been developed to equip chartered accountants with the knowledge and the skills required to take on the new challenges of the 21st century. I would like to reiterate that chartered accountants have been and will continue to be at the forefront of driving economic growth in India. At ICAI, we are dedicated to our members and will continue to strive for their success. I'm really very happy that one area in which we are putting our heart and soul is the field of AI, and AI is that field that as far as the chartered accountants are concerned, we are very happy that AI is coming, artificial intelligence is coming in each and every part of the trade and industry, and with the help and support of AI, the chartered accountants can deliver in the best possible manner. So we are ensuring that even our newly qualified chartered accountants in our course curriculum do have the best of the knowledge of the AI. Gone are the days when we were having the students at the age of 40, 45 years, 50, 55 years, 60 years. Because at times, one was passing the CA examination in 30 years or 35 years and 40 years. It happened that father and son both appeared in the CA final examination. Son passed CA final examination and father was ready to appear for the next attempt. But now, out of 10 lakh, practically 9,99,000 students are the Gen Zs. So CA is the first choice for the Gen Zs as far as the accounting profession is concerned. And we have always given the first priority to the technology, and we know that the trade industry want the chartered accountant, the Gen Z wants that the technology should be at the forefront. So in CA course curriculum, we have made the necessary modification and necessary changes, and we will, in the times to come, we will furthermore make the necessary changes so that number one, of course, Gen Z can be attracted. ICAI always believes in collaboration with the different pillars of corporate leadership, and one amongst them are the CHROs. Human capital is equally important when we compare it with the finance capital or the technological assets. You all are the architect of culture in an organization. You all are the champions of talent. You all are catalyst of change. You have a very pivotal role. When it comes to hybrid model, you adjust yourself and try to accommodate that. When it comes to performance, you
ensure that the performance is good, but at the same time, you keep eye on the wellness of the employees and the staff. When it comes to promotions, you ensure that the best of the talent is promoted and take the leadership role. When it comes to balance between organization's objective and personal objective, you play a very important role. So friends, here I can say there is an interdependence between finance and the people strategy that jointly we do. The Director of Finance, the CFOs, and the CHROs jointly do that. Jointly we build the organization, we make it efficient, we make it humane, we make it inclusive, we make it future ready. तो आइए बातचीत के सिलसिले को सीधे शुरू करते हैं। रघु जी, आपसे हम स्टार्ट करना चाहेंगे। आप हमें बता सकें, जिस तरह से बिजनेसेस हम देख रहे हैं मेजरली इस डिजिटल दौर में अपने आप को बदल रहे हैं, रेलेवेंट रहने के लिए, प्रासंगिक रहने के लिए, और कई तरह के वो स्टेप्स ले रहे हैं। इस बदलते लैंडस्केप को और इंटरनल मोबिलिटी के डायनेमिक्स को आप किस तरह से रीड करते हैं? To address this question on internal mobility, it is very critical to create and promote internal talent. Because internal talent has the context of the business, and it's important to kind of develop internal mobility. A lot of companies are investing in technologies to develop internal talent, to grow them, to identify the skill gaps. So it's gaining a lot of traction. Yeah. अर्पण, आप हमें बता सकें, क्यों ना ऐसे ही कल्चर डेवलप किया जाए जिसमें टीम मेंबर्स को मोटिवेट किया जाए, वो डिफरेंट रोल्स के लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो जाएं, उनको एक्सप्लोर करें, और फिर वो कंपनी के साथ खुद भी उनकी भी ग्रोथ हो। इसको किस तरह से इस कल्चर को इम्बाइब किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशंस में? देखिए, अब इंटरनल मोबिलिटी, आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कंपनीज इवॉल्व हो रही हैं, बिजनेसेस रणनीति बना रही हैं, और इस समय पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी हो जाती है ना कि हमारे लोग भी तो इवॉल्व करें। एब्सोल्युटली, लोग भी तो ग्रो करें, लोग भी तो कुछ अलग करें। जो वो कर रहे हैं पिछले सालों से, पिछले 8-10 सालों से जो भी काम कर रहे हैं, वो भी तो डिफरेंट करना चाहिए ना। तो इंटरनल मोबिलिटी, इट्स टाइम दैट वी ट्रांसेंड मोर फ्रॉम अ policy standpoint to a principle approach, and also a mindset change that needs to be brought within the organizations. Considering internal mobility as a table stake when it comes to business transformation. एक तरह से हम देखें, बदलाव की हवाएं चल रही हैं राजेश जी, winds of change। आप भी बताइए अपने अनुभव से किस तरह से आप इसको रीड कर रहे हैं, और अगर इंटरनल मोबिलिटी स्ट्रैटेजीज एकदम इफेक्टिव हों तो वो एम्प्लॉयज़ के मोरल को काफ़ी बूस्ट कर सकती हैं, और फिर जो आउटपुट है वो और बेहतर हो सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक गेम चेंजर भी हो सकता है। आपका एनालिसिस इसको लेकर क्या है? सौरभ, सबसे पहले मैं रघु की बात को ऐड करता हूँ कि जैसे एक आदमी इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बंदा है, उसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन की नॉलेज है, अभी तक हायरार्की में वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के फील्ड में था। ICAI की एक खासियत है, जो हमारे कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन है, हमारी 50 कमिटीज़ है, हम उसको ऑडिट में, एश्योरेंस में, डिजिटल में, AI में, हर एरिया में हम उसको कोशिश करते हैं एक्सपर्ट बनाने की, और रेगुलर हर जगह पे हमारे जहाँ भी ब्रांचेज हैं, स्टडी सर्कल, वहाँ रोज़ प्रोग्राम्स होते हैं, वर्चुअली भी होते हैं, फिजिकली भी होते हैं। लोग आते हैं, अटेंड करते हैं, कोई अलग फील्ड के लिए भी अपनी एक्सपर्टीज़ को डेवलप करते हैं। तो AI के मामले में मैं आपको बताऊं, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, इंडिया के ICAI ने बाहर 11 कंट्री में अभी तक हमारा कोर्स दे दिया है, और 23 कंट्री की डिमांड है कि हमने बाकी कंट्रीज़ के साथ में किया, पर जो इंडिया की AI ICAI की है, इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। रघु जी, जैसे हम देख रहे हैं ये कैसे पॉसिबिलिटी, संभावनाएं तलाशने की बात हो रही है, और कैसे नई तरह से सोच से नई रणनीति बनाकर आगे बेहतर बढ़ा जा सकता है। लेकिन क्या क्रॉस फंक्शनल टीम्स में चैलेंजेस भी होते हैं? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग टीम है उसके डायनेमिक्स भी थोड़े बदलते हैं, तो उस पर अगर आप कुछ हमें शेयर कर सकें, आपका क्या नज़रिया है उस पर? To be honest, I think hoarding talent is a problem. I mean, अगर आपका टीम में if a person is very good,
you don't want that person to move out because that has been a practical problem. So I think structurally company organizations and HRs should set up policies. For an example, हमारा company में you don't have to get your permission from your manager. You have to inform him that like I want to apply for a new job. There is an opportunity marketplace where you can apply for a job. And if you clear the interview and you have the required skill set for the new role, you can move into the new role. So a policy change, jidhar you are empowering the employee to apply without the permission bureaucracy happening. Second, I think you also have to incentivize the manager. Like let's say, for example, if you're a great manager, great leader, you have to export talent. You have to build talent in your team, you export it to them. Also, you should move from that success of my team to a success of the organization. That mindset should happen, Like if the person is going to a different team, he's going to help the organization do better, Okay. अर्पण, आप ये भी बताएं, जैसे हम इंटरनल मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल हायरिंग से आपको न्यू आइडियाज़ मिलते हैं, फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलता है, एंड ऑल्सो यू गेट एक्सेस टू स्पेशलाइज स्किल्स. तो इसको किस तरह से देखना चाहिए? वो उसकी भी अपने एडवांटेजेस हैं. सो ग्रोथ में कैसे हमें बढ़ना होगा? इंटरनल मोबिलिटी भी, एक्सटर्नल हायरिंग भी, मतलब आपका इसको किस तरह से आप व्यू करते हैं? देखिए, एक्सटर्नल हायरिंग के बहुत मेरिट्स हैं और इसीलिए तो मतलब तभी तो ग्रोथ आएगी ना. आप एक्सटर्नली हायर करेंगे, लोगों को कंपनी में लाएंगे, तभी तो हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे. पर क्या वो जो प्रक्रिया है वो क्या ज़्यादा उसमें ज़्यादा कॉस्ट लगती है? तो मैं उस पर आता हूँ. देखिए, आपको डिटरमाइन करना होगा किस चीज़ का मेरिट है और आप क्या करना चाहते हैं. अब जैसे एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका फोकस एरिया किसी नई चीज़ पे काम करने का है जो आपके पास इंटरनल पॉसिबली स्किल सेट नहीं है या लोग नहीं है, आई थिंक वहाँ पे आपको डेफिनेटली एक्सटर्नल हायरिंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप ये कहलाती है बाय स्ट्रेटजी, कहलाती है बाय स्ट्रेटजी ऑफ टैलेंट फ्रॉम द मार्केट, राइट. इंटरनल मूवमेंट्स जो होते हैं वो पार्ट हो जाते हैं आपके बिल्ड स्ट्रेटजी एज वेल एज डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी के, राइट. इंटरनल का एडवांटेज ये होता है कि इट्स ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क मिटिगेशन प्लेटफॉर्म. एक्सटर्नल हायरिंग में आप जब लीडर्स को बाहर वगैरह से लाते हैं, ये देखिए चैलेंजेस होते हैं अराउंड कल्चरल इंटीग्रेशन इनटू ऑर्गेनाइजेशन. और मैं बात करता हूँ एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के पर्सपेक्टिव से जो हाईली कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स्ड होती है, राइट. वहाँ पे जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. चीज़ें कैसे मूव करती हैं वो समझने की जो क्षमता होती है, जो एक इंटरनल कैंडिडेट में होती है, वो हायर होती है. एट द सेम टाइम, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं या आप चेंज कर रहे हैं, आपको कुछ स्किल्स डेवलप करना पड़ेंगी जो डिफरेंट हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग लोगों के पास नहीं है, और उसके लिए आपको बाहर से टैलेंट लाना पड़ेगा, राइट. बट एक टाइम जाता है आउटसाइड टैलेंट को इंटीग्रेट करने में, आउटसाइड टैलेंट का सक्सेस देखने में. आप किसी को लेके आते हैं, 1.5 साल तो यही निकलने में निकल जाता है कि कुछ आउटकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो रघु जी, आप भी मेंशन करें, फिर हम आपके पास आ रहे हैं. एक, एक्सटर्नल हायरिंग में रिक्रूटमेंट कॉस्ट, एंड सेकेंडली क्या प्रोडक्टिव होने में और भी ज़्यादा समय लगता है या कैसे वो प्रक्रिया? Just wanted to add to what Arpan was saying. So for the person to also culturally assimilate, if you are bringing in external talent, उनको आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिक कल्चर होता है, उसमें assimilate होने के लिए there will be some time. Also, just to add to what Arpan was saying, succession planning में it is not just internal succession planning. Succession planning is you identify critical roles, important roles, and उसके नीचे you will have to look at your current employee strength and you will keep mapping successors. ये role के लिए this person can be a successor. If you don't have, you always say that to be externally hired. So external hiring is not a bad thing, but it's better to kind of like have the internal fill rate higher. तो आइए बातचीत के सिलसिले को अब हम आगे बढ़ाते हैं. अर्पण जी, जिस तरह से जो वर्ल्ड ऑफ वर्क है वो इवॉल्व हो रहा है, तो लीडरशिप टीम की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. उसको आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? कैसे उसको आप इस समय पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं? Evolving industry dynamics, evolving times, I think it's also very important for the leadership to identify what are some of the most important themes that we want to focus on.
And themes typically should be compartmentalized into my key business objectives and outcomes that I want to focus on. What are the kind of people priorities that I want to focus on? And how am I building the right culture, the leadership culture within the organization? ये कुछ important themes है जो उन्हें focus करनी चाहिए और फिर each of these themes के अंदर I think उनको अपने top wins, big bets define करने चाहिए कि हम अगले 3 साल में, अगले 5 साल में किन चीज़ों पे फोकस करेंगे, क्या करेंगे जिससे हमारी कंपनी आज जो ऑपरेट कर रही है बेटर उस पर ऑपरेट करेगी. तो मुझे लगता है कि फोकस ऑन पीपल, फोकस ऑन कल्चर एंड फोकस ऑन टेक्नोलॉजी. राजेश जी, आपसे भी एक ओपनिंग कमेंट लेते हैं. आपके हिसाब से एक लीडर की, एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? सर देखिए, लीडर एक तो सबको लेकर के चलता है, पूरी टीम को लेकर के चलता है, टीम के साथ खड़ा मिलता है सुख दुख हर चीज़ में, और टीम के साथ कनेक्टेड होता है. टीम में अगर कोई कमज़ोर है, कोई स्ट्रांग है, तो वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए, किसी को लो डाउन नहीं करे, कि लोगों को मोटिवेट करते हुए सेट करे अपने टीम और अपने ऑर्गेनाइजेशन का और अपने बेसिकली जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जिसको वो लीड कर रहा है, उसके गोल्स को सेट करें, उसके लिए सब गोल सेट करें और उसके लिए निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे. कि प्लान करके, जैसे ये बिल्डिंग की एक एक ईंट प्लान किया गया तब ये रूम इस तरीके का बना, तो वो पूरी प्लान करते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, उस ऑर्गेनाइजेशन के हर टीम मेंबर को इकट्ठा लेकर के चले और उनके अंदर में वो मैनेजरियल स्किल्स भी डेवलप कराए, उसको इम्प्रूव भी कराए और उसको धीरे धीरे ग्रोथ भी दे, तभी वो आगे बढ़ सकता है अपने साथ में, अपने ऑर्गेनाइजेशन को और पूरी टीम को लेके बढ़े. Rajesh sir, I'll start with you. Now, beyond salary, there are a lot of non-traditional elements. And this is something that the new workforce, the Gen Z employee, let's say, are really focusing on. This could include anything from the financial well-being to even educational stipends. So what's being done to ensure that this is being offered? I can say the work culture is changing with time. Previously, it was a time of 10 to 5 in the office, and you perform during that time. But now the Gen Z, they tell that we need to give this thing at this date. That is our responsibility. How we do, when we do, need not be taken care. इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं, दोनों चीज़ें हैं. जैसे कि वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि भाई टाइम का बेस्ट इस्तेमाल और एक्शंस लेते रहना चाहिए, रेगुलर और निरंतर लेते रहना चाहिए. तो आज के दिन उनको अपनी ग्रोथ अगर नज़र आएगी तो वो ज़रूर स्टिक करेंगे अदर देन पे. व्हाट आई फील. Right, thank you. Sarita, I'll come to you. Organizations are making every effort to embed social and environmental purpose into daily work, and just to make sure that the new force, the Gen Z employees that we're talking about, feel that they are able to make a difference, because that's the motto that most of them join the workforce with. So what do you have to say about that? So I think we'll have to look at it from a little background perspective also, because Gen Z is just not only the next generation, but it is also the now generation, right? So it has grown up with technology in one hand and the meaning and the purpose in the other hand, right? So with that kind of a mix, what sort of principles that will drive them towards the workplace, right? So we talk about three V's. It's a vision, voice, and the velocity, right? So vision is about giving them the purpose and meaning to their work. What does their work and the role which they are doing is contributing towards the bigger perspective of the organization, right? And make them involve them in the decision-making process than just giving them the task or the activity as such. And there are several career-specific aspects are there. You take a Gen Z along with them, show them a roadmap, they will stick with you. Otherwise, they will find their GPS way out to work with somebody else, right? So all that is there, and I think the important thing is how do you make them connect with the organization, because at the end of the day, people don't leave the organization, they leave the disconnections, right? So that's going to be the key thing. Post-COVID, I think most of the employees are very comfortable with hybrid mode, very flexible way of working. But when you talk about the new, the Gen Z,
basically, the kids in the workforce, they don't look at it as a benefit. For them, it's the minimum requirement for the job. I think a trait that's very prevalent with this generation is choice, right? I can give a little anecdotal, right? My father's generation just wanted a job. My generation wanted to work for IBM, Google, but this Gen Z generation, they're thinking about becoming entrepreneurs, starting their own. That's their choices that they have, and that's with those choices becomes how the organization addresses it. So my take is pretty straightforward on this. Productivity and work-life balance, there's nothing we can do in office that matches work from home or a hybrid model, right? Productivity, we've seen what's happened to the stock market during COVID, right? It just went through the roof. So in terms of profitability, work from home works. But there's things in terms of team culture, team collaboration. If that's the deliverable that your department has, then there's definitely benefits of having at least a 3-day work from office, because those pieces in terms of driving an office culture or having something like marketing where you can't really work in silos, you have to come and work together. So I think we as leaders have to look at these specific roles. Some roles are going to be beneficial working completely remotely, and there are going to be other roles that you might have a mandate where they need to be. But ultimately, those choices have to be given. How are you making a career ladder to be less hierarchical and more fluid? We definitely cannot have a different career ladder from them, but we offer flexibility. We offer them the choices that they have, that they want to be a CA during work hours, and after that they want the flexibility so that they can do what they want to. That is their passion. So that is something that we offer, and that works very well for them. What an engaging and enriching session this was. We need to hear it loud for all the panelists here. Thank you so much for giving us your time and sharing your thoughts. Thank you so much.